Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday and we were doing technical terms in plant breeding. Continuing the same, the first one for day is CMS, that is cytoplasmic male sterility. अब मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? एक कंडीशन होता है जिसमें कि प्लांट जो है वो फंक्शनल पॉलन नहीं बना पाता है. अब साइटोप्लाज्मिक है मतलब कि मैटरनल इनहेरिटेड ट्रेट जिसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो जाती है इन पॉलन एंड एंथर डेवलपमेंट. Male sterility showing cytoplasmic inheritance. Now, next one is cytoplast. A protoplast containing either no nucleus or an inactive nucleus. Deficiency. Deficiency क्या होता है? किसी चीज की कमी. Loss of a part of chromosome. डिहाइड्रेशन अवॉइडेंस. और देखिए नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन टॉलरेंस. तो एक क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है, मतलब वाटर स्ट्रेस है बट उसको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है. टॉलरेंस टॉलरेट कर रहा है, खड़ा है, बाकी जीनोटाइप्स नहीं स्टैंड कर पा रहा है. अवॉइडेंस एबिलिटी ऑफ अ प्लांट to retain a relatively higher level of hydration under conditions of soil or atmospheric water stress. While tolerance में क्या होगा? Ability of a plant to suffer a significantly lower level of changes. suffer कर रहा है but कम suffer कर रहा है than other genotypes in response to the same level of dehydration. Now, the last one for the day is descriptor, a character considered important and or useful in description of a population or a germplasm accession. ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है, इंपॉर्टेंट है उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो डिस्क्रिप्टर. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till then. Take care. Bye bye.